वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम दिव्स। तो आज आशीष ड्राइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ दो और जने कार के अंदर, जिनका नाम है शिव एंड आयुष। शिव के साथ पहले मिल चुके हैं हमारे एक प्रीवियस ब्लॉग में, जो कि है ट्यूबिंग ब्लॉग। तो वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे। एंड आयुष भी हैं, जिनसे हम मीटअप में मिले एंड हमारे बहुत ही खास दोस्त बन चुके हैं आज की तारीख में। हमने काफ़ी घूमना फिरना अलग से कर लिया है। सो मीटअप ज़रूर जाइए, आपको भी कोई ना कोई अपना ज़रूर मिलेगा कनाडा की देश में। तो अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, लोनली हैं, सो प्लीज़ जॉइन Waddup Canada group, and if you feel that you can connect with that meetup, you'll enjoy over there, just go there, have a bunch of friends that will be waiting over there with open arms and to make friends with you, to be friends with you, sorry. So anyway, we are on our way for our June meetup. तो जो Waddup Canada को फॉलो करते हैं उनको पता होगा जून मीटअप कहाँ हो रहा है। वो है Lavender Farms, जो कि है I don't know. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। Near Brantford, somewhere near Brantford. Exact address. So basically, at this point, it was just that for us, more than the place, it was important that we meet with the friends that we have made during our last meetup. So our theme for this meetup is basically potluck. तो हमने कल रात को बनाए हैं वड़ा पाव एंड मुंबई च वड़ा पाव का स्वाद हम सबको चखाएंगे। देखते सबको पसंद आता है कि नहीं। शिव, मैं और आशीष कल रात को बैठ के वड़ा पाव बना रहे थे, काफ़ी मज़ा आया। हमने सोचा कि भजिए भी बनाए। हमने सोचा कि सुबह उठ के बनाते हैं, बट सुबह उठ के बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। हमारे ब्रैम्पटन से बहुत दूर है वो, तो हमने कल रात को मिडनाइट बनाया ताकि फिर भी फ्रेश रहे। एंड वी आर ऑल सेट and we hope that everybody likes it. हमने सुबह उठ के फिर हमने पेट्रोल भरा, गार्लिक चटनी ली और अब हम आयुष को पिकअप करने आए हैं। उसके घर के बाहर खड़े हैं and he will join us soon. Thank you for waiting. हाँ जी सर, लेट क्यों हो गए आप? यार 8 बजे उठा था। अरे लो, लेट क्यों हो गए आप इतना? मैं क्योंकि रात को 2 बजे तक जाग रहा था। क्या कर रहे थे रात को 2 बजे तक? क्या कर रहे हैं यार तू? नींद ही नहीं आ रही थी। वो कर रहा था जो हमारे खुफिया ब्लॉग में जब तक रिलीज नहीं हुई है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट एंड फिर हम लोग वापस चले जाएंगे रोड पे। हम लोग अभी पहुंच गए हैं द लैवेंडर फार्म एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ह्यूज। इट हैज स्विंग्स, बैठने की बहुत सारी स्पेस है एंड साथ ही साथ यहाँ पे छोटा सा कैबिन टाइप्स बना हुआ है, अगर आप ये देख सके तो। और यहीं पर हमारी मीटअप चालू है। मोर देन 70 पीपल आए हैं। अभी सिड ने अनाउंसमेंट की है और उन्होंने काफ़ी सारा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट टुडेज़ मीटअप एंड बुफे चालू हो चुका है। सब डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स लाए हैं, अपने अपने कल्चर के हिसाब से लाए हैं एंड हम लोग एंजॉय करेंगे, मीटअप में लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ लैवेंडर फार्म एंजॉय करेंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, कल सारे लोग कॉन्सर्ट से आए हैं। With you that I've learned over the last year with owning bonnieheath. Has anybody ever cooked with lavender before? No. Oh my goodness. Today, Sid has generously offered you guys lemonade and ice cream, which are both made here. And yes, you can go and ask. What type of animals are there? Here? Yeah. Oh my goodness. Okay, so do you want little animals or big animals?
animals. Okay, so the biggest animal that I've seen out here, don't be shocked if you're walking and you find fur on the ground. Because sometimes the coyotes come and they find the bunnies. And they eat the bunnies because there's a prey and a predator. Are there eagles? Because if there weren't eagles, then snakes will just be roaming around Okay, so big. 2 weeks ago, my husband and I were driving down the road and we saw a bald eagle in the field and it was carrying a mouse or a rat or something. And we had to stop. I was on a meeting in the car. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, Preeti. Preeti ka behind the scenes. Hi, guys. This is like the Kerala favorite Rajma, the one that we made you say there. Yes. Rajma. This is Rajma. This is This our red bean curry. red bean Goes curry, and well it's with- very famous in the Yeah, north yeah, of that's how you eat that. northern India. This is northern India food. Yeah. This is the, I want everything, so I'm you can taking get a it. bit of more. Yeah, buffet plates look. I know. It's so good. Look at it. Is it good? Yeah. Can I take some home? Yeah. Oh my god. Oh my god, I so love your expressions right now. Fried dough. Yeah, fried dough. I'm really I'm gonna do this. अभिषेक आपने कॉन्ट्रोवर्सी कर दिया अगली बार आपको डबल प्राइस बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैण दे पर के प्याला मैनू पी लैण दे Picture. Hi, Meher. Say hi. Hi. तो इस तरीके से हमारा डे एंड होने आ रहा है. गाइस, अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा था. It was fantabulous. इसका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमारा सेकंड था एंड इट वाज सुपर ऑसम. हमने पूरा दिन वाइनरी में बिताया एंड देन उसके बाद बीच आए. बीच में तीनों नहीं आने वाले थे बट फिर मैंने इनको घसीट के लाई हूँ. All thanks to दिव्या जी. हाँ तो आना जी. पड़ता है, you know. तो बीच पे आना ज़्यादा इंजॉयबल था. सो वी एंजॉयड मोर एंड नाउ वी आर हेडिंग All होम. right, that's it from our side. यस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं. प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. बोल दो यार. Subscribe.